हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। जैसे कि आपको पता होगा, हम चल रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर बीकॉम ऑनर्स का यूनिट 5 के सारे नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डिस्कस द लीगल प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉइज हेल्थ इन फैक्ट्रीज, व्हाट आर द मेजर्स नीड टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रोवाइड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे आधी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर दी और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको सारे के सारे नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप नंबर पर। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सारे के सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं फाइनल एग्जाम में। सारे के सारे बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, इससे ज़्यादा मतलब बेहतरीन नोट्स आपको नहीं मिलेंगे एट वेरी रीजनेबल प्राइस। मतलब सबसे सस्ते वैल्यूएशन में मैं सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए इसका आंसर्स देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, मैंने पॉइंट नंबर 5 तक मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आर्टिफिशियल ह्यूमिडिएशन के ऊपर। आज बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 से ओवर क्राउडिंग। यहाँ पे जैसे सेक्शन 19 के अंडर ये आता है, नो रूम इन एनी फैक्ट्री शेल बी ओवर क्राउडेड टू एन एक्सटेंट इंजूरियस टू द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड देयर इन। नंबर 7 देखिए लाइटनिंग है, सेक्शन 17 के अंडर आता है, इन एवरी पार्ट ऑफ ए फैक्ट्री वेयर वर्कर्स आर वर्किंग और पासिंग देयर शेल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन सफिशिएंट एंड सुइटेबल लाइटिंग, नेचुरल और आर्टिफिशियल और बोथ। नंबर 8 देख सकते हो ड्रिंकिंग वाटर, सेक्शन 18 के अंडर आता है, इन एवरी फैक्ट्री effective arrangement shall be made to provide and maintain at suitable points conveniently situated for all workers employed there in a sufficient supply of wholesome drinking water। उसके बाद नंबर 9 देखिए लेट्रिन्स एंड यूरिनल्स, सेक्शन 19 के अंडर आता है, इन एवरी फैक्ट्री सफिशिएंट लेट्रिन एंड यूरिनल्स accommodation of prescribed types shall be provided conveniently situated and accessible to the workers to all times while they are at the factory। नंबर 10 देख सकते हैं यहाँ पे स्पिट टून्स, इन सेक्शन 20 के अंदर आता है, इन एवरी फैक्ट्री देयर शैल बी प्रोवाइडेड ए सफिशिएंट number of spit buns in convenient places, they shall be maintained in a clean and hygienic conditions। हम बात करते हैं नंबर डी आंसर्स की। तो यहाँ पे डिस्कस द लीगल प्रोविजंस फॉर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आ सकता है। डिस्कस वेरियस मेजर्स टू एंश्योर इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो इसका आंसर देखिए, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 लेस डाउन द फॉलोइंग सेफ्टी प्रोविजंस। नंबर 1 देखिए फेंसिंग ऑफ मशीनरी, इन एवरी फैक्ट्री एवरी डेंजरस पार्ट ऑफ एन एनी मशीन शैल बी सिक्योरली फेंस्ड बाय सेफगार्ड्स ऑफ सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन व्हिच शैल बी कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड एंड केप्ट इन पोजीशन व्हाइल द पार्ट्स ऑफ द मशीन दे आर फेंसिंग आर इन मोशन और इन यूज। नंबर 2 देख सकते हो work on or near machinery in motion, where in any factory it becomes necessary to examine any part of the machinery while the machinery is in motion. Such examination shall be made only by a specially trained adult male worker wearing tight fitting clothes to be supplied by the occupier। नंबर 3 देख सकते हैं सेल्फ एक्टिंग मशीन्स, नो ट्रांसवर्सिंग पार्ट ऑफ ए सेल्फ एक्टिंग मशीन इन एनी फैक्ट्री एंड नो मटेरियल कैरिड देयर ऑन शैल बी अलाउड टू रन ऑन इट्स ओन ऑनवर्ड और इनवर्ड ट्रांसवर्स within a distance of 45 centimeters from any fixed structure which is not a part of the machine। नंबर 4 देख सकते हो chasing of new machinery, all machinery driven by power and installed in any factory shall be so shrunk and caged or otherwise effectively guarded as to prevent danger। नंबर 5 देख सकते हो prohibition of employment of women and children near cotton openers, no women or children shall be employed in any part of a factory for pressing cotton in which a cotton opener is at work। एंड नंबर लास्ट पॉइंट देखिए नंबर 6 लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स, in every factory every lifting machine and every chain rope and lifting tackle for the purpose of raising of lower persons goods or materials shall be of good construction, sound material and adequate strength, free from defects and properly maintained। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी पॉइंट्स हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद और भी क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय सोशल सिक्योरिटी, मेंशन द फीचर्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी, डिस्कस द स्कोप ऑफ सोशल सिक्योरिटी और भी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूँगा। आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।